सकता हूँ क्योंकि कल मैं शेयर स्क्रीन. Okay, let me start. Now, in this chapter, we are going to define the curvature at a point on a surface eventually, और फिर उसकी properties वगैरह देखेंगे. So for that, we define what is called a normal section. अब problem ये है कि इसका पेन कहाँ गया? पेन कहाँ रखा है? आज क्या हो रहा है? नोटिस नहीं मिल रहा, तो इसका पेन नहीं मिल रहा है. जिससे मैं इस पे लिखता. That's too much. अभी था इधर ही. Why is this pen? Okay. चलो हमारे 5-7 मिनट इसमें चले गए. But nevertheless, let's start. What's called the normal section of a surface. Normal section. Now what we do, I have a surface. It's a regular surface, so I can define a normal at any point. So, but this is some surface patch, उसका कोई हिस्सा है, which is of course the range of a function from my parameter plane UV. यहाँ पे कोई open set है, जिसको हमने map किया था into R3, and it depends upon U and V, and as you know, they are independent parameters. Or then at each point, I can define this surface normal. That would be the perpendicular vector to the tangent plane at this point, at some point R U V. Now what I do, if I take a plane, imagine a plane going through the surface, but which contains this surface normal at that point. What I'm trying to say, I take a plane, any plane that contains this surface normal at this point, and it intersects this surface at some point. And in a curve, of course, a plane would intersect a surface at some curve. Just like here, जो ये plane है, which contains the unit normal, intersects the surface in some curve. यहाँ पे बड़ा simplified है. It could be more complicated, right? So इस curve को हम बोलते हैं normal section of the surface at this point P. Section means a curve of intersection between two planes, two surfaces. In this case, we have got a surface and a plane, and plane is such that which contains the unit normal. इसको हम बोलते हैं normal section. Of course, ये भी normal section होगा. There could be infinitely many normal sections because I can rotate this plane around this normal. It would contain the normal, and it would also intersect the surface. So you could have another normal section like this, another normal section like this. So there would be many normal sections. Now, so let me define it. जो मैंने अभी कहा, a plane drawn through a point on the surface, through a point on a surface, cuts it in a curve called the section of the surface, called a section of the surface by that plane. If the plane contains the normal to the surface at that point, if the plane contains the normal to the surface at that point,
The curve is called a normal section. ये जो curve of intersection है, the curve is called the normal section. और जैसा कि मैंने कहा, नॉर्मल सेक्शन जो है वो बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटी में नहीं होंगे एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस एट दैट पॉइंट. अब ये है कि हमें पता है, अब व्हाट इज नॉर्मल सेक्शन? इट्स अ कर्व ऑन द सरफेस एट अ पॉइंट which has this property that it is the intersection of the plane containing the normal at that point and the surface. Now we can find, we already have a formula for finding the curvature of a curve. So this is a curve in R3 ultimately. तो इसका curvature हम ढूंढ सकते हैं, हम सभी normal sections का curvature ढूंढ सकते हैं, और इन्हीं की मदद से हम define करेंगे the curvature of the surface at that point. So वो आगे आएगा. पहले हम देखेंगे अगर ऐसी कोई curve है तो उसका curvature क्या होगा. So let's call it curvature of normal section at a point on a surface in terms of fundamental magnitudes. Let me heading लेता हूँ. Now let k sub n, इसको चोरी denote करते हैं by k sub n, denote the curvature of the normal section. अब हम थोड़ा एक convention देंगे यहाँ पे, because it is a plane curve. You know, it lies inside the plane. It is the curve of intersection. So we can give it a sign because it is. We can give it a डायरेक्शन, यू नो, कि कर्वेचर को कब हम पॉजिटिव माने कब हम नेगेटिव माने. साइन कर्वेचर होता है जो प्लेन कर्व का कर्वेचर होता है, बिकॉज ये नॉर्मल सेक्शन कर्व तो है, ये साथ में क्या बोलते हैं, साथ में ये प्लेन कर्व भी है, बिकॉज इट लाइज इनसाइड अ प्लेन. सो व्हाट वी डू, सो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, देन हम मानेंगे के एन इज पॉजिटिव when the curve is concave, यानी up, on the side in which n points out, the surface normal points out, because it lives inside the plane. यानी कहने का मतलब हम मानेंगे ये जो कर्वेचर है, ये जो एक मतलब इसमें इस कर्व में जो है वो ऑफ कोर्स n लाई करता है ना. तो अगर इस तरह से है तो हम मानेंगे ये कि n पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये इस प्लेन में कर्व जिसमें नहीं n कंटेन करता है इस तरह से है तो हम मानेंगे कि n इज नेगेटिव. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ साइन, ये उतना मसला नहीं है. So what we do, we know that अगर कोई कर्व है, we know that dt by ds with respect to its arc length, अगर हम इसको differentiate करेंगे, it is known as a double dash, which is my k sub n, and a sine curvature times the normal to the curve. Now this is what we call the sine normal or principal normal, which is equal to kn times n. क्योंकि मैंने इसको माना है n इस डायरेक्शन में है, वो परपेंडिकुलर है इस कर्व को ऑफ कोर्स, एंड देन ऑफ कोर्स मैंने n को भी इसी डायरेक्शन में लिया है. बोथ आर यूनिट वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन बाय माय चॉइस ऑफ दिस. कि n को मैंने कब पॉजिटिव रखा, जब ये इस तरह से कर्व है
तो then it means that ये जो r डबल डैश होगा ये kn times this sin normal या principal normal जो होगा it should be in the same direction as n, क्योंकि मैंने इसको n डायरेक्शन माना है, मैंने इसको पॉजिटिव तभी माना, अदरवाइज क्या होगा था, ये माइनस होता, बट once we choose this convention, this is what I should have. Therefore, I can write k sub n is nothing but n dot product with r double dash, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड्स को डॉट प्रोडक्ट करूंगा n के साथ, n dot n is 1, so I will get kn is equal to n dot r double dash. But we know that this curve जिसकी हम बात कर रहे हैं, it lies on the surface, यानी r at s is basically जो भी इनका पैरामीटर होगा, it would be r, it lies on the surface, so it should be r at u at s, v at s. So using chain rule, I should have r dash is equal to ru du by ds plus rv, and this is actually dr by ds, which is equal to this by chain rule, यानी r dash जो है वो है r sub u dash, that means differentiation with respect to arc length parameter, rv into v dash. Differentiating again with respect to s, using the chain rule again, you would have r double dash is equal to d by ds of r double dash u dash plus r v dash. So that would be equal to, using the chain rule, हमें इस पे, now this u depends upon s, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, so it would be ru u double dash plus u dash into d by ds of r sub u. इसी तरह से हमें मिलेगा rv v double dash plus v dash into d by ds of rv. Now r is a function of two variables, so is r sub u and r sub v, तो यहाँ पे फिर से चेन रूल लगेगा, यानी ये बनेगा, फिर मैं पेज टर्न करूंगा, मेरे करूंगा ये टर्म होगी u dash into, क्या होगा ये, it would be del by del u of r sub u du, right, plus del by del v into r sub u du. Now this is the chain rule, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s यही आएगा, मैंने गलत लिखा, should be du by ds, गलत कुछ नहीं हुआ, हाँ ये होगा इसका चेन, तो इस तरह से होगा, यानी वो मिलेगा बेसिकली u dash into r sub u, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव हो गया इसका, into u dash plus r sub uv into v dash. Similarly, ये जो ये टर्म होगी ये होगी v dash into r sub vu into u dash plus r sub vv into v dash. तो मैं डायरेक्टली इसको अब सब्स्टिट्यूट करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी बाय चेन रूल दिस वुड बी इक्वल टू, यानी बाय चेन रूल दैट इज, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, r double dash is equal to r sub u double dash plus u dash into r sub u dash plus r sub uv into v dash plus suppose मेरा rv v double dash plus r sub vu या uv, because mixed partial derivatives are equal since the function is differentiable, u dash plus rvv into v dash, of course अपना v dash था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था, अब सारा कुछ जमा करके ये मिलेगा हमें r sub u double dash plus
r sub v double dash, इन दो टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, सो यू वुड हैव r sub u, ये वाली टर्म, u dash स्क्वायर प्लस r sub v है, पहले लिखते हैं वो, ट्वाइस r sub v, u dash v dash plus r sub v into v dash square. So this is what we get. Now using now substituting, अब मेरे पास ये है, अगर मैं चलो इसका नाम 1 रखूं कि kn का वैल्यू क्या है, it is n dot r double dash. So kn is equal to n dot r double dash. So वो बन जाएगा n dot, ये सारा कुछ ru u double dash plus r sub v double dash plus r sub u dash square plus twice r sub u dash v dash plus r sub v dash square. Now this is the dot product. Now we know that n is perpendicular to ru as well as rv. तो इन दो terms के साथ जो dot product है वो पहले आएगा 0 0. Then I would get n dot r sub u into u dash square plus n twice n sub r dot uv is equal to u dash v dash plus, then I have what, r v n के साथ dot product and into v dash square. Now what we see that n dot u is nothing but l, so it is l u dash square plus twice n dot ruv is m, the second fundamental magnitude. So it is u dash v dash plus n, of course this is n dot rvv, that's the end of it. मतलब n का ये वैल्यू है, so this is what I get. यानी ये है basically l du by ds का स्क्वायर plus twice m du by ds dv by ds, then n times plus dv by ds का whole square. I can also write it as l du square plus twice m du dv plus n dv square divided by ds square. और अगर तुम्हें याद हो, ds square was nothing but the first small element, length element on the surface, उसका स्क्वायर हमेशा बराबर होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, यानी du स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ l du स्क्वायर प्लस ट्वाइस m du dv plus n dv square divided by e du square plus twice f du dv plus g dv square, since ds square is equal to, ठीक है. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं लेता हूं एक सरफेस, ठीक है, और मैं कोई पर्टिकुलर नॉर्मल सेक्शन लेता हूँ, ये मेरा नॉर्मल था, फिर मैंने इसके थ्रू एक प्लेन को इंटरसेक्ट किया अपनी कर्व के साथ, तो ये जो ये कर्व है, इसका जो कर्वेचर है kn, it is equal to l du square, the ratio of second and first fundamental form. ठीक है. Now of course at each point I can evaluate fundamental magnitude, वो point पे ही evaluate होते हैं, right? Or du dv would be some change along this curve, some du dv. तो अगर ये मेरा कर्व होगी, ऑफ कोर्स ये du dv चेंज होगा, ये भी एक नॉर्मल सेक्शन है. अगर मैं इस प्लेन को रोटेट करता हूँ अराउंड द नॉर्मल n, तो इट वुड स्टिल बी अ नॉर्मल सेक्शन जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है. तो अगेन lmn के वैल्यू वही रहेंगे, लेकिन जो चेंज है
उनकी चेंज की डायरेक्शन जो जो डी यू डी वी की चेंज इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, वो इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगी, तो वहां पे एक डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा, तो हमें एक दूसरा नॉर्मल सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट नॉर्मल सेक्शंस के एट अ सर्टेन पॉइंट नॉर्मल कर्वेचर्स निकाल सकते हैं। सो नाउ तो कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन हम कहते हैं नॉर्मल कर्वेचर एट दैट पॉइंट। यानी दिस इज एक्चुअली, जब मैं कहूंगा नॉर्मल, मैं कहूंगा नॉर्मल कर्वेचर एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट P, उसका मतलब है नॉर्मल सेक्शन किसी कर मैं आई एम रेफरिंग टू curvature of normal section, of course in a certain direction at P. So let me write down the definition. यानी इसको हम नॉर्मल कर्वेचर एट पॉइंट P कहेंगे इन द डायरेक्शन DUD, normal curvature. Let a point P with position vector R at UV be on the surface R is equal to R at UV, that is my equation of the surface. The normal curvature at P in the direction du dv is equal to the curvature at P of the normal section at P parallel to the direction du dv. अब जो मैं अभी तुम्हें बोल रहा था, parallel to the direction, यानी वो कर्व जो उस डायरेक्शन में रहती है, उस सरफेस पे, मतलब जो ना नॉर्मल सेक्शन कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, parallel to the direction du dv. तो normal section at a point P in this direction would be called actually the curvature of the normal section at that point. So I'm the normal curvature of the surface at that point P. Now what we do, I don't know whether I have missed anything, but yes. Okay. So now we come to what we call principal directions and principal sections. ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा इस थ्रू चैप्टर में, what we call principal directions and principal curvatures. What we do, अब जो मैंने कहा कि एक सरफेस है, राइट, उस पे एक सरफेस नॉर्मल है, तो ऑफ कोर्स इस सरफेस नॉर्मल को अगर हम इंटरसेक्ट कराएंगे एक ऐसे प्लेन से इस सरफेस को, तो हमें एक नॉर्मल सेक्शन मिलेगा। तो एक कर्व है जो नॉर्मल सेक्शन है, it is the intersection of the plane which contains the unit normal to that surface, right? And उस plane का जो intersection curve है with the surface, that is the normal section. Of course there would be many normal sections at a point, infinitely many. तो अब हम देखेंगे उनका कर्वेचर, उन नॉर्मल सेक्शंस का। उनमें जो सबसे बड़ा नॉर्मल सेक्शन है, यानी सबसे बड़े वैल्यू का कर्वेचर आएगा एक कर्व का, और सबसे छोटा जो कर्वेचर आएगा उन नॉर्मल सेक्शंस में, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कर्वेचर्स। और उन डायरेक्शंस को, जिन डायरेक्शंस में वो मैक्सिमम कर्वेचर है उस कर्व ऑफ सेक्शन, उस नॉर्मल सेक्शन का, उनको बोलेंगे प्रिंसिपल डायरेक्शंस।
तो हम डिफाइन करेंगे इसके द नॉर्मल सेक्शन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन। वो जो दो नॉर्मल सेक्शंस होंगे उनको हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस को और उनके कर्वेचर्स को प्रिंसिपल कर्वेचर्स कहेंगे। तो ये हमेशा होगा, वो हम दिखाएंगे भी कि द नॉर्मल सेक्शंस ऑफ द सरफेस। एक मिनट। क्लास which have greatest and least value या least curvature are called principal sections। हम इन्हीं दो sections में interested हैं। The maximum या greatest and least जो भी तुम कहने को, the maximum and minimum curvatures are called principal curvatures and are denoted usually by K sub A and K sub B and their corresponding directions are called principal directions। एक where radii of यानी उनका reciprocals, radii of vectors are called principal radii of curvatures। radii of curvature होता है curvature का reciprocal at a point per curve। If I take the locus of the now, if I take all the जो उसके locus लूं मैं सभी centers of principal curvatures का, जैसा कि हमने वहां लिया था envelope में, तो उनको हम कहते हैं उससे एक surface generate होगी। So we call that surface of centers। So let me, although it's not relevant हमारे केस में, the locus of the centers of principal curvatures, it would be a collection of curves that would generate a surface at all points of a given surface is called it's एक और surface के corresponding एक और मतलब surface के corresponding हमें एक और surface मिलेंगी जिसको हम बोलते हैं surface of centers। Now the important thing is the principal directions, which is very interesting। ये जो दो directions होंगी along which you would have the maximum maximum curvature and minimum curvature, they would be always orthogonal। The principal directions are mutually orthogonal। वो भी हम दिखाएंगे आगे चल के कि उनकी जो डायरेक्शंस होगी वो हमेशा mutually orthogonal होंगी। Now I want to find equation for the principal curvatures। अब मुझे पता है and any direction normal section is given by L du square plus twice m du dv plus n dv square divided by e du square plus twice f du dv plus g dv square। तो obviously ये vary कब होगा, मतलब for each change at a point for each direction du dv I get a value for kn। और प्रिंसिपल कर्वेचर है जब मैं du dv को वैरी करता हूँ, डायरेक्शन को वैरी करता हूँ, जो kn का सबसे बड़ा वैल्यू आएगा और सबसे छोटा वैल्यू आएगा, दे आर माई प्रिंसिपल कर्वेचर्स। तो मैं ढूंढना चाहता हूँ उनके लिए इक्वेशन।
what we do, I just introduce a parameter which represents DUTV, then I maximize it and I find the maximum and minimum value by putting the derivative of that equal to 0. So let me show you how. Now, equation of principal curvatures. Now, the normal curvature K sub n at a point P, let's call, which has parameter value UP, in the direction DUTV is given by direction, let me call it DUTV, is given by what? K sub n is equal to, जैसे कि मैंने कहा, L du square plus twice M du dV plus N dV square divided by E du square plus twice F du dV plus G dV square. Now what I do, I just divide both numerator and denominator by dV square. So I would get L times du dV square plus twice M times du by dV plus N whole divided by E du by dV का whole square plus twice F du by dV plus G. इसको मैं लिखूंगा L times lambda square plus twice M times lambda plus N divided by E times lambda square plus twice F times lambda plus G, where of course lambda is my parameter. यानी मुझे देखना है जब मैं इस lambda को चेंज करता हूँ, जब मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, kn कैसे चेंज होता है. And it depends upon my direction, my choice of direction at a point on the surface. Now I want to find what is the maximum value when I let this lambda change. For that, I just differentiate with respect to lambda. Now the principal curvatures are the maximum and minimum values of Kn. Hence, we have to find those values of lambda and what direction हमें ढूंढनी है, along which it is maximum and minimum, for which Kn is maximum or minimum. The condition for K sub n to be maximum or minimum is that dk sub n by d lambda, इसको क्या हो गया, कंडीशन ये है कि dk sub n divided by d lambda is equal to 0. Okay, now we just differentiate this kn with respect to lambda. What was kn? Kn in terms of lambda was equal to क्या था? It was L lambda square plus twice M lambda plus N divided by E lambda square plus twice F lambda plus G. तो quotient rule use करेंगे और it is the same thing as, वैसे less than 1 minute आ रहा है तो मैं रुकूंगा क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से रिपीट करना पड़ेगा. Yeah, let me stop share and end the meeting. तुम फिर से ज्वाइन करोगे. आदिल, तुम सुन रहे हो? अटेंडेंस का तुमने कर लिया? 27 है प्रेजेंट है, मैंने नोट कर दिया 27 4 फरवरी को. So let me end it. तो फिर